Assalamu alaikum, everybody. Welcome to Hori Lounge, uh, being hosted by NICAT, National Incubation Center for Aerospace Technology, based in Rawalpindi. I'm very excited. We are starting a new series. I'm 𝗬𝗏𝗏, your host. I'm the president at NICAT. And the program, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा इंग्लिश ना बोलूँ to get the maximum reach. लेकिन कभी कभी नेचुरली ऐसा हो जाता है, so please pardon me. अच्छा, तो प्रोग्राम का बड़ा सिंपल फॉर्मेट है. इसका मकसद क्या है इस शो का? इसका मकसद है इंक्लूसिवनेस, शेयरिंग, इनोवेशन. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बाहर की स्टोरीज पढ़ते हैं, सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं विद इन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, लेकिन लोकलाइजेशन पे लोकल हमारे चैलेंजेस जो आते हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, हमें उसकी इतनी नो हाउ नहीं होती. तो इस सीरीज ऑफ शोज का मकसद ही यही है कि आप इंटरेक्टिव समझें इसको, पोज योर क्वेश्चंस एंड द गेस्ट ऑफ द डे इज गोइंग टू चूज द बेस्ट क्वेश्चन एंड उसका बेस्ट रिवॉर्ड यही होगा कि उनके साथ आपकी फिर एक सेशन होगा आधे घंटे 40 मिनट मैक्सिमम 1 आवर का, जिसमें वो मेंटोरिंग या कोचिंग टिप्स देंगे आपको. So with that, we will be looking forward to your response, how we can improve the show. But I'm very excited because this is the first time I'm actually hosting a show. I've been the guest on the other side for a long, long time. And to the extent, अब मुझे कोई कहता है कि सर आप गेस्ट हैं, तो मैं कहता हूँ I've got nothing new to say. You can check anything and everything on my page. Google me and you'll find an answer. तो वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई है. Today's guest, which is the first one, I think is the most important one. Somebody that I admire a lot because he has got a very 360-degree-ish profile. He's been all around, and मैं उनको साथ लेके आता हूँ ताकि आप उनकी फेस भी देख सकें और फिर मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा. बट द मेन थिंग इज दैट introducing Nabil Kadir. Welcome to the show, Nabil. आपका माइक शायद. Thank you, Janab. Thank you very much, and बहुत मुबारक हो आपका नए शो के. Thank you very much. Nabil, the biggest claim to fame for Nabil, I think, and the biggest contribution is idea Croreo ka. That was handled by him very, very well, and he will tell us his experiences, how he met more people, knew the ideas he got from listening to those people. But he's been everywhere. He's been part of digital transformation. He's been part of innovation, and इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स हैं और इसके अलावा HRC डेवलपमेंट. हम वो कैपेसिटी कैसे डेवलप करें विद इन द IT इकोसिस्टम एंड नॉट जस्ट एंटरप्रेन्योरियल. तो इतनी बहुत सारी बातें हैं, हम नबील के साथ साथ ही पढ़ेंगे. एंड ही इज ऑल्सो एन ऑथर. सो नबील, स्टार्टिंग ऑफ, what has been your experience so far? 18 years of journey, mashallah, and a very successful one. So how excited are you, or do you feel rusty or anything? Actually, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Ayub bhai, for a very I think I don't deserve this kind of an introduction. अभी ऐसी कोई बड़ी achievement नहीं की, लेकिन yes, 18 to 19 years in the industry, having met with people, having worked with all kinds of people, having made friends, having made not so good friends also. It's all we'll get to that. We'll get to that as well. We've made, as you grow in your career, you learn things, you make mistakes, you rectify them, you move on. So I don't think there can be a single day when one should be feeling rusty. Even, the people I've been inspired by, Ayub bhai, are those who have taught me the bigger the problems, the more you should enjoy them, the more you should feel motivated. So I think that's the spirit with which I live. So problems really don't cause any rust, बल्कि वो मुझे बेहतरी करती हैं.
और जिस तरह आपने कहा हमें उर्दू में बात करनी चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में बात करूं ताकि आपकी ये बात दूर तक जाए। तो Yeah. मुझे लगता है यही है कि हम सब सीखते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, और बिल्कुल जी रस्ट नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं। अभी तो आई हैव डन नथिंग येट। पार्टी अभी तो शुरू हुई है. हाँ, I'm only just getting started, I'm right? only just getting started. Alhamdulillah. I think that is the spirit every day that you get up. Okay, Arey, I'm feeling the most excited, and today is going to be the best day of my life. Yes. अच्छा, to the viewers, I would say कि ये typical interview नहीं है, ये more of बातचीत as well. And जो कई मेरे जहन में मेरा अपना, I'm a serial entrepreneur myself. I hold wear many hats. तो मुझे भी कई चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं, तो वो साथ साथ क्लैरिटी आती जाएगी. नबील, हम ये देखते हैं कि पीपल आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल हीरोज विद इन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम. हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट, एंड हाउ इम्पोर्टेंट विज़-अ-वी लोकलाइजेशन इज? इसमें जी देखें, मेरी राय ये है कि ग्लोबल फिगर्स से इंस्पायर होना, इफ दे आर टीचिंग यू समथिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. It should not be something that should pose that के वो क्योंकि और लोग कह रहे हैं तो हमें भी इंस्पायर होना है. ये बड़ा ज़रूरी एक डिफरेंशिएशन है जो क्रिएट करनी चाहिए. इंस्पिरेशन को समझना ज़रूरी है कि इंस्पिरेशन है क्या? क्या आप उस शख्स से इंस्पायर हो गए हैं, उस इंसान से इंस्पायर हो गए हैं, तो थोड़ी-सी गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज़ हर इंसान में प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं. आपने उसकी एक साइड देखी, आपको अच्छे लगे. मेरा ख्याल है इंस्पिरेशन का ताल्लुक इंसान से कम बल्कि उसकी सिफ़ात से ज़्यादा है, उसकी ट्रेट से ज़्यादा है. तो आई थिंक इंस्पिरेशन ट्रेट्स से लेनी चाहिए. वो ट्रेट्स और वो क्वालिटीज़ आपको ग्लोबल हीरोज़ में भी मिल सकती है, आपको लोकल हीरोज़ में भी मिल सकती है. आपको वो ट्रेट्स लेकर अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना चाहिए, और उसी से आप शेप होते हैं. एंड यू रिमेन वेरी ओरिजिनल देन, बिकॉज़ यू आर नॉट कॉपीइंग एनीवन, जस्ट पिकिंग अप अ Right. क्वालिटी एंड एडिंग इट टू योर पर्सनैलिटी. तो आई एम अ बिलीवर ऑफ बोथ. जहां से भी Right. आप सीख सकें जो आपकी पर्सनालिटी की स्पेक्ट्रम में एक पॉजिटिव एडिशन करता है, आपको उससे फौरी तौर पे सीखना भी चाहिए और इंस्पायर भी होना चाहिए. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. जाहिर है कि हम जो भी बात करेंगे कहीं ना कहीं पहले डिस्कस हो चुकी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द गेस्ट, हुएवर द गेस्ट ऑफ द डे इज, उनका पर्सपेक्टिव क्या रहा है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, और फिर जाहिर है उसी से उनका नजरिया, जो पर्सपेक्टिव कहते हैं, वो डेवलप होता है. अच्छा, हम जब आइडिएशन की बात करते हैं, जरा से पहले इसके 2 कदम पीछे चले जाएं. What is the typical profile of an entrepreneur? जो अभी नहीं बने, जो एस्पायरिंग है, उनमें क्या क्या ट्रेड्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वो फाउंडर बनेंगे या सपोर्ट बनेंगे या कोई टास्क लेना चाहेंगे विद इन द इकोसिस्टम. लेट्स टॉक अबाउट दैट कि वो क्या सिफात हैं. मैं आपको इसमें अपने एक बड़े की बात कोट करता हूँ जो उन्होंने मुझे जी. सिखाया था. आजकल आजकल वो बड़े, पता नहीं अब ये बंद ना हो जाए आपकी पॉडकास्ट, पर आपको वो बड़े आजकल आजकल एक कैदी नंबर से मशहूर है. उन्होंने मेरी एक इंटरेक्शन में मुझे बताया था कि हाँ. 2 तरह के लोग होते हैं. हाँ. एक वो, उन्होंने अंग्रेजी में बोला था तो मैं अंग्रेजी में कोट कर देता हूँ आपको. हाँ. There are 2 kinds of people in this world. One हाँ. who dream and they हाँ. run after that dream. And then there's another type who believes in someone else's dreams and helps that person achieve them. वेरी गुड. Both are equally important. जी. जी. So this unison, this unity between the two is what creates greatness. So I think अगर स्टार्टअप फाउंडर को आप पूछते हैं कि उनको क्या उनमें देखना चाहिए हमें, I think the first few things that tell कि एक बंदा स्टार्टअप फाउंडर या एक खातून स्टार्टअप फाउंडर या एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकेंगी, उसमें उनकी कुछ पर्सनालिटी की क्वालिटीज होती हैं, वो नजर आती हैं. रेजिलियंस, परसिस्टेंस, परसिवियरेंस बहुत हाँ. जरूरी है. क्योंकि सबसे पहले आप जब भी कोई नई चीज देंगे लोगों को, वो उसको रिजेक्ट ही करेंगे. अरे ये तो हो नहीं सकता, ये तो चलेगा ही राइट. नहीं, राइट. ये तो उसने तुमसे बेहतर कर लिया था, मुझे तो पता ही है. पीपल
will always give you free advice, and those people who do not take that free advice and call it as bad as free food, they're usually entrepreneurs. Entrepreneurs वो होते हैं कि आमतौर पे फ्री फूड होता है, माठा ही होता है, इस तरह फ्री एडवाइस भी माठी होती है। तो फ्री एडवाइस जो नहीं देते, जो अपने ओपिनियंस पे बहुत ज्यादा स्टैंड करते हैं, जो अपना रास्ता खुद बनाना पसंद करते हैं, और उसमें मार भी पड़ती है, उसमें फिर तोहमतें भी लगती हैं, उसमें फिर मॉकिंग भी होती है। इट्स अ टफ जर्नी। इसके अंदर वो थिक स्किन नेचर हो, हाँ, और साथ ही साथ एबिलिटी टू टेक फीडबैक हो, जो बहुत जरूरी है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं और आप एक दूसरे को जानते हैं, आप मेरी कुछ स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, क्योंकि आप मुझे बेहतर जानते हैं, तो आप शायद मेरी कुछ कमजोरियां भी जानते हैं। तो जब आप मुझे समझाएंगे, मैं आपके पास कोई मुद्दा लेके आऊंगा, कोई मसला लेके आऊंगा कि यू भाई ये मसला हो गया, हम कब बात करते रहते हैं ऐसी, तो दसों उनकी करना है, तो फिर आप उसको कहते हैं कि यार नोइंग यू तुम इस तरह कर लो इसको, क्योंकि तुम मैनेज कर लो। तो वो जो चीजें हैं ना, वो बड़ी विजिबल होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के बारे में, कि हाँ तुम कर लोगे, इवन इफ द टाइम इज टफ, इवन इफ यू नॉट मेकिंग मनी, इवन इफ रेवेन्यूज नहीं आ रहे, तुम सही सिंक में हो और तुम्हारा पैशन बहुत क्लियर है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एकेडमिक करें, तो मैं ये कहूंगा, अगर आपको थोड़ी डोमेन नॉलेज है और आप बिलीव करते हैं, आप फॉर एग्जांपल, ये मैं बड़ा पुराना एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप जूते बनाते हैं, तो फिर आपको जूते बनाने का अलिफ से बड़ी ये तक सब पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है और आपने जूते का कारोबार करना है, तो फिर आपको उससे कोई रोक नहीं सकता, आप कर लेंगे, क्योंकि आपको उस डोमेन की नॉलेज भी है, आपके अंदर पैशन और ड्राइव भी है, और आपके अंदर हार ना मानने का जज्बा भी है, रेजिलियंस, परसिवियरेंस है। अगर ये दो तीन चीजें नजर आ रही जनाब, तो बंदा फिर नाकाम तो नहीं होता एज एन एंटरप्रेन्योर। तो मैं ये दो तीन चीजें देखता हूँ फौरन, और मुझे लगता है कि हाँ, इस बंदे में या इस औरत में स्पार्क है टू बी अ स्टार्टअप फाउंडर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। एक बच्चा उठा है 22 साल का, 23 साल का, लेट्स से कि उसने भी रिसेंटली ग्रेजुएट किया है जी, और अचानक उसको कोई ख्याल आया कि यार ये आइडिया है और मैं अगर अपने आप को देखूं तो मुझे तो बड़ी नीड है। उस एक्साइटमेंट में क्या उसको एकदम से जंप इन कर जाना चाहिए या उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना चाहिए, और अगर ऐसा है तो वो प्रोसेस क्या हो सकती है? मैं आपको बताऊं, इस जुर्म में मैं बहुत शामिल हूँ, इसका सारा जिम्मा मेरे पे जाता है। मैंने जो ये कौम को अपनी पिछले 10 सालों में लगा दिया इस रास्ते पे, प्लान 9 शुरू करके, और हर बंदा एंटरप्रेन्योर बनेगा, हर बंदा एंटरप्रेन्योर, हर बंदा बनेगा, हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बनता। खासतौर पे जो यंग लोग हैं, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज को बदलें कि एंटरप्रेन्योरशिप का हम नाम लेते हैं और हमारे दिमाग में फौरन 24-25 साल का लड़का आ जाता है। हम अमेरिका में नहीं रह रहे, हम मार्क ज़करबर्ग की दुनिया में नहीं रहते, हम पाकिस्तान में रहते हैं। यहाँ डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ आपका एजुकेशन सिस्टम आपको उस तरह रिफाइन नहीं करता, आपको सवाल पूछने पे डांट पड़ती है, आपको सही और गलत का उस तरह से फर्क खुद मौका नहीं मिलता पता लगने का। आपको कोई बड़ा बताता है, कोई उस्ताद बताता है, कोई मौलवी बताता है, कोई घर वाला बताता है कि सही और गलत क्या है, आप खुद नहीं उसको ढूंढते। बाहर में वो बच्चा 14, 15, 16 साल की उम्र से वो डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देता है। इसलिए वो 24-25 साल की उम्र में एक स्टार्टअप करता है, जिसके लिए वो $1 मिलियन, $2 मिलियन उठा लेता है। हम उस मॉडल को यहाँ फॉलो नहीं कर पाते। एक तो हमारे पास ना उस तरह की कैपिटल है, हमारे पास कैपिटल उस तरह की एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में, जो कि वेंचर में डाली जा सके। अभी इस वक्त हमारे मुल्क की इकोनॉमी के डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ है। दूसरा, हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी अभी उस तरह से मैच्योर नहीं होते छोटी उम्र में। तो इसका जो सही रास्ता है वो ये है कि आप अगर कुछ अर्सा काम कर लें, नौकरियां कर लें, धक्के खाएं, किसी और के पैसे पे सीखें जनाब, किसी और के पैसे पे सीखें, वो आपको तनख्वाह भी देगा और सिखाएगा भी। उस पे सीखिए और उसमें अपनी नीश ढूंढिए कि हाँ, मुझे ये चीज बहुत क्लिक करती है, मेरा ख्याल है मैं ये बहुत बेहतर कर सकता हूँ। तो मे बी 4-5 साल, 6 साल के बाद, having experienced working with people, having experienced professionalism, having experienced discipline, तब जा करके आप अगर अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए काम में क्या डायनामिक्स है। काम की डायनामिक्स ये है कि आपने अकेले तो करना नहीं, आपको लोग चाहिए। अब अगर आपको लोग मैनेज नहीं करने आते, आपको लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करनी आती, आपको उनसे काम निकलवाना नहीं आता, तो आप एक छोटी उम्र में आमतौर पर इन चीज़ों पे स्ट्रगल करते हैं। उसकी वजह से डिजास्टर्स एंड फेलियर्स हैपन।
तो आई थिंक आपकी बात में मैं समझूंगा कि जरूरी है कि सोच समझ के किया जाए जो किया जाए। अगर बहुत छोटी उम्र में कोई बहुत बड़ा, तो वही आ गई है आपके ऊपर कि आप कुछ जबरदस्त काम करने जा रहे हैं और वो बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग है और बहुत ही यूनिक इनोवेशन है, तो फिर पंगा लेके देख लें। इट विल बी 50-50, लेकिन इट्स मोर वाइज टू बी अ बिट मोर हाँ। मैच्योर and having had experience of the world, professional and personal both, then start your business. व्हाट व्यूअर्स, व्हाट मैं अगर इसको थोड़ी सी एक दो अल्फाज में, एक दो लाइंस में अगर समराइज कर दूं, अपनी कैपेसिटी, अपना उर्दू में ज़र्फ कहते हैं, उसको बिल्ड करें। अपनी, आपकी पेशेंस, आपकी रेजिलियंस, नेवर से डाई, इस एटीट्यूड को। एंड अच्छा, मैं चले ये तीन बातें तो आ गई यहाँ पे। कैपेसिटी बिल्ड करना बड़ा जरूरी है, अपना ज़र्फ, अपने आप को तैयार करें। अगर आप कोई क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं तो सुबह ज़ाहिर है एक्सरसाइज करेंगे, अपनी फिटनेस को देखेंगे, फिजिकल फिटनेस देखेंगे, अपने जहन में सोचेंगे। इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों का खेल नहीं है। लोग कहते हैं, लगता है उन्हें बच्चों का खेल, बिल्कुल नहीं है। और कमज़ोर दिल हजरात तो बिल्कुल ना खेलें इसको, because you'd be wasting your time and your money a lot. और बेस्ट चीज़ यही है कि जितना इल्म आप हासिल कर सकते हैं उतना करें। सो ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। एंड आई थिंक हम ज़रा आगे चलते हैं कि once you're in the journey, how important is it to take the pressure on? जो आप थियोरेटिकली सोच के चल रहे होते हैं मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगी, या मेरी प्रोडक्ट ये सॉल्यूशन देगी और वो नहीं हो रहा था, प्रोडक्ट में कमी है, आपकी मार्केटिंग में कमी है, या आपका इतनी देर में, जितनी देर में आपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाई है, लोगों के ट्रेंड चेंज हो गए, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। हाउ डू यू एक्चुअली हैंडल दैट? हाउ डू यू पिवट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज टू पिवट? देखें, रिसर्च और मार्केट अंडरस्टैंडिंग is it's a continuative process. It's not a one-time process. It has to Right, be part of a startup's journey. So when right, you are building a team, I believe right, you have to have one person at least in the team who's very interested in industry trends. What's going right. on? What are the competitors doing? हमारा USP क्या होगा? हम किस मार्केट में पहले मार्केट लॉन्च करेंगे? हम किस प्राइस पे लॉन्च करेंगे? हमारा MVP बनेगा तो हमने किनको दिखाना है? Who are our early users? हमारा सैंडबॉक्स क्या है? All these things, they play a very important role. और उसके अंदर टीम का बड़ा किरदार होता है कि टीम कौन है आपकी. That's why I usually fear a team of all engineers messes it up. क्यों होता है? क्योंकि वो बेचारे सोच ही स्ट्रेट लाइंस पे होते हैं। प्रोडक्ट बना लो, मार्केट में ले जाओ, बिकेगा ही बिकेगा। भाई क्यों बिकेगा? तो गलत हो जाता है ना. So we need the right combination of people. This is where the importance of team comes in, I feel. Yes, pivot is a natural process also. Why? Because what you're building, as you continue to build more, I feel you find more very intuitive new elements in that whole process. कि यार इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी है. अच्छा ये करूंगा तो इस पे तो यार मुझे मार पड़ जाएगी, कंपैरेटर ऑलरेडी कर रहा है. आपको कहीं ना कहीं पे आपको मूव अराउंड करना पड़ता है. तो पिवट इज लाइक moving from plan A to plan B with one foot in plan A. You can't just totally switch. Like आज हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं, कल हम जो है वो किताबें बेचेंगे. इस तरह का स्विच कर लेना is usually not advisable. Yes, you can slowly transition. It's part of the process. Nevertheless, I strongly feel कि pivot की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है. पिवट करने से बहुत बार ये होता है कि जो दो अर्ली बिलीवर्स हु बिलीव्ड इन द इनिशियल आइडिया, they kind of lose track because they're like, हम तो ये कर रहे थे, अब हम कहाँ आ गए हैं. So उस process of transition from one idea to the other or one direction to another, one very important element is to hold the people together Yeah, and make them believe in that vision. कि अगर हम पिवट yeah. कर भी रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं और हमारा इसमें किस तरह का फायदा है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है. ये सब कुछ जब आप देख लेते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप फेल हो. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस होता है. जी. So for the people who do not understand the concept of pivot, ये in the face of adversity, यानी जहां आपको challenges आए,
आपने प्रोडक्ट एक खास तरीके से खास मार्केट के लिए लॉन्च की है एंड दैट इज सम फॉर सम रीजन इज नॉट वर्किंग आउट, तो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह अगर क्रिकेट की लैंग्वेज में ले लें, अगर एक बैट्समैन है एक साइड पे बहुत ज्यादा वो करवा रहा है, वो चौके लगा रहा है ऑफ पे या ऑन पे, तो आपको बॉलर को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। ओवर द विकेट कर रहा है तो राउंड द विकेट आ जाए, और उस तरह से कुछ चेंज करे जिससे आप डिस्टर्ब करें। इसी तरह आपने व्हेन यू कम टू स्टार्टअप इकोसिस्टम, आपने थोड़ी सी डायरेक्शन को अपनी ऑल्टर करना है, ताकि आप एंड ऑफ द डे इज द कंज्यूमर, इज द कस्टमर हु इज गोइंग टू बाय, इज द कंज्यूमर हु इज गोइंग टू यूज योर प्रोडक्ट। उसके लिए आप मजीद और वैल्यू कैसे बना सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन जो है ये उस तरह से पहुंचे जिस तरह से आप उसको कर रहे हैं, आपने प्लान किया था। अच्छा, मार्केटिंग के बारे में मैं आपकी राय सुनता हूँ अभी एक सेकेंड, लेकिन मुझे किसी ने पूछा था कि आपके हिसाब से मार्केटिंग क्या है, तो मैंने कहा यार मार्केटिंग तो ये तो बहुत सबसे आसान सवाल है। जैसे अगर मैं इसको बिल्कुल समराइज करूं तो मार्केटिंग इज अबाउट creating the right message and using the right channels for your product. अच्छा, ये तो बाहर से बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि डू यू एग्री विद दिस डेफिनेशन, और अगर नहीं तो और क्या हो सकती है डेफिनेशन जो सबको समझ आ जाए कि क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस, कि मार्केटिंग ये है। क्योंकि अनलेस वी हैव द राइट मार्केटिंग एंड वी आर नॉट रीचिंग आउट टू आवर टारगेट ऑडियंस, ये सारा इधर उधर जा रहा है, हवाई फायर चल रहे हैं। जी नबी। आप इतना अच्छा बोल रहे थे, मैं अपनी चाय पीने लगा था, आप रुक ही गए। मैं तो सुन रहा था बैठ। तो चले, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बारी आ गई। तो अच्छा, मेरा इसमें ख्याल ये है कि मार्केटिंग इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट देन अ लॉट ऑफ अस अंडरस्टैंड। मेरा जी भी जी, कॉन्सेप्ट ओवर द इयर्स चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। ठीक है, ठीक है। मुझे मार्केटिंग की शायद उस तरह समझ नहीं थी, ऑल्दो पीपल ऑलवेज रिलेट मी टू ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा पब्लिक पर्सोना रहा है। जी जी, I feel marketing is a big responsibility. Why? राइट Because marketing is a way, a channel through which you are telling people who you are. You're telling people what you stand for. You're telling people what your product stands for, what your company's values are. What do you really believe in? Marketing is a double-edged sword. You do it wrong, उसको अनडू करना और रीडू करने में बड़े साल लग जाते हैं, और तब तक यू लूज द कस्टमर, ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो अगेंस्ट यू। आई थिंक मार्केटिंग एक फंडामेंटल कोर है किसी भी कारोबार को खड़ा करने के लिए। लेकिन मार्केटिंग का जो मकसद है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड होना जरूरी है। इन द स्टार्टअप वर्ल्ड, you just cannot believe in marketing a product. In the startup world, you have to have the right combination of marketing, जिसको पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं फाउंडर की, वो, क्योंकि उस फाउंडर पे जब बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है, पीपल इन्वेस्ट इन पीपल जनाब, दे डोंट इन्वेस्ट इन द प्रोडक्ट, दे इन्वेस्ट इन द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द पीपल। So, राइट who becomes more important? So, the concept of personal branding should also be part of your marketing plan. कि आपने अपने आप को एज अ फाउंडर कैसे ब्रांड करना है, कैसे पोजीशन करना है, क्योंकि लोगों का फेथ आप में बनेगा तो वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को देखेंगे। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी ह्यूमन नेचर। तो उसके हिसाब से देखिए। और फिर साथ ही साथ आप जब प्रोडक्ट की या सर्विस की या अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करते हैं या मार्केटिंग करते हैं, तो फिर उसकी झलक भी वो होनी चाहिए जो आपके पर्सनैलिटी की अक्कासी करे। आपका राइट। प्रोडक्ट बिल्कुल और है, ना सर्विस बिल्कुल और है, आप बिल्कुल एक और तरह के इंसान हैं। इन दोनों को आप कैसे जोड़ेंगे आपस में, बहुत बड़ा मसला है कश्मीर है ये। तो जो ये लोग कर लेते हैं वो कमाल ही होते हैं, बड़ा कम होता है। लेकिन यस, द प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुड डिपिक्ट हू यू आर एज अ पर्सन। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई डोंट नो इफ आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन दिस, बट नहीं दिस नहीं, इज मैं इसमें से बात जो निकालता हूँ आपकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर माय यंग व्यूअर्स और नॉट सो यंग व्यूअर्स लाइक माई सेल्फ, it is very important that you have a certain integrity associated with your brand name. जो आपका नाम है
आपकी आवाज नहीं आ रही है। अयूब, आपकी आवाज नहीं जा रही। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट थिंक आप वोकल हैं इस वक्त, ऑडिबल नहीं है आप इस वक्त।